तो हमेशा कूदता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा. That is won't sit idle, stable. Okay, so it means that they find out at most, they thought that most of the exothermic are spontaneous. Most of the exothermic reactions are spontaneous, but not all. It's not that all the exothermic reactions are spontaneous. No, most of the exothermic reactions are spontaneous. Another example is if I am taking is N2 plus 3H2 in the presence of V2O5 as a catalyst, what we are getting is 2 ammonia. Now in this reaction, it is also spontaneous. Okay, so most of the reactions which are exothermic are spontaneous. Okay, now if I am taking is water liquid into water solid, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? Which is more energy? Water 3 states होते हैं, gaseous, liquid and solid. So gaseous has most energy, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी more है, इसकी less है. So what about whether the reaction is endothermic or exothermic? Endo. Endothermic. Is it spontaneous? Does water solid converts Yes, into ma'am. water? Is it spontaneous? Is it always spontaneous? Is it happening at the room temperature in India? If I am keeping a No. glass of water, will No, it convert ma'am. into solid? No. No, ये ma'am. आपने इसको एक बार फ्रीजर में रख दिया, फिर आपने उसको बाहर निकाल लिया. हमने यही कहा ना, spontaneous reactions are those which once initiated. Once initiated means I am taking water, I am keeping in the freezer for 5 minutes, and then I am removing it. Will it still convert into ice? No, ma'am. No, ma'am. No, So ma'am. this type of reaction is non-spontaneous. Okay, but can you tell me at room temperature? Room temperature means, okay, it means or below 0 degree. Sorry, if the temperature is above 0 degree. If the temperature is above 0 degree, then this reaction does not take place. But suppose I am going to Antarctica, then what happens? Spontaneously होगा. अंटार्कटिका में अगर मैंने वाटर लिक्विड रखा, वो अपने आप सॉलिड हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना. Yes or no? Why? Yes, ma'am. क्योंकि वहां पर वहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर ही अच्छा है. क्योंकि मैम वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है मैम, इसलिए. Yes. So it means that this particular reaction, it depends upon the temperature. It can be non-spontaneous, it can be spontaneous. अंटार्कटिका में तो ये spontaneous है ना, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा. I am just keeping it outside and it will freeze. And this reaction is endothermic. So it means when the scientists try to explain on the basis of energy. Okay, so when a scientist, the first why question was that why certain reactions are spontaneous. Question ऐसा नहीं आएगा, ये सारा intro ही है. Why certain reactions are spontaneous. So this was the question before the scientist. Okay, so they tried to find. Okay, so scientists tried to find this on basis of energy, but they could not get a definite conclusion because they find out that there are certain reactions which are exothermic, they are spontaneous, but all the exothermic reactions are not spontaneous. Then they tried endothermic. सारे एंडोथर्मिक भी spontaneous नहीं होते. मैम एंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हम डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं ना. Yes. करा रही हूँ, मैं एक करके बिल्डअप ही करा रही हूँ और एग्जांपल्स ले रही हूँ. Okay. Then they thought that there are certain endothermic reaction which can be spontaneous at a particular temperature. Okay. Now see, if I am taking this reaction, NH4Cl, जो आप पहले पढ़ते थे, dissolution of ammonium chloride. क्या हुआ है आपने 8th 9th में आई थी? Dissolution of ammonium chloride. Now it is a spontaneous reaction.
but endothermic. While we are dissoluting this are but endothermic. Is it okay? So dissolution of ammonium chloride, ये आपको पहले, I don't know whether you have done it or not. Otherwise, in 7th or 8th class, there was an activity to demonstrate exothermic and endothermic. So if you are taking a test tube, whenever you are coming to the lab, you can try it. If you are taking a test tube, you are adding ammonium chloride and water to it, you will find the test tube becoming cold. It means the reaction is endothermic. So it means that there are certain endothermic reactions which are also spontaneous. हम इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स तो आयन सी फॉर्म होते हैं ना सर? आयन से फॉर्म होंगे, NH4 plus and Cl minus. Okay, so it means that first point, most of the exothermic reactions are spontaneous, सारे नहीं होते. Then second point, there are certain endothermic reactions also which are spontaneous. ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को लेते हैं कि most of the exothermic reactions are spontaneous, but all the exothermic are not spontaneous. Okay, if I am taking this water liquid and it is converting into water solid and it is converting into water liquid at room temperature. Now, whether this reaction is endothermic or exothermic? Ma'am, exothermic. It is Exothermic. exothermic. Okay, how it is exothermic? Releases Ma'am, heat. because it's Just wait. मैम इट्स एंडोथर्मिक. ये रिएक्शन क्या था? एंडो था, एक्सो था? दोबारा से देखो एक बार. Ma'am, एंडो. Water liquid into water solid. Was Ma'am, this reaction? opposite हो रहा है इसलिए exothermic. ये रिएक्शन क्या होगा? वाटर लिक्विड की ज्यादा एनर्जी है, सॉलिड की कम एनर्जी इसमें है. एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा तो फ्रॉम सराउंडिंग तो एंडोथर्मिक ही होगा. ये वाला Yes, ma'am. हम सॉलिड टू लिक्विड में एंडोथर्मिक ही होगा ना, क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट लेके ही. ये वाला Liquid. नीचे वाला एक्सोथर्मिक मतलब मैम अच्छा नीचे वाला एक्सोथर्मिक होगा. एक्सोथर्मिक होगा ना, क्योंकि लिक्विड की ज्यादा Yes, एनर्जी है, सॉलिड की कम एनर्जी है, तो ये रिएक्शन हुआ एक्सोथर्मिक. बट इफ वाटर सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर लिक्विड, व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन? इसकी कम एनर्जी, लेस एनर्जी, इसकी मोर एनर्जी है, यानी इट इज एब्जॉर्ब्ड. मैम ऊपर वाला एंडोथर्मिक होगा. ऊपर वाला एंडोथर्मिक होगा. वेरी गुड, क्योंकि अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगी, only then it is converting into liquid. Okay, if I am taking is water liquid and it is converting into water gas, what about this reaction? Ma'am, एंडो. एक्सोथर्मिक. ठीक है ना, लिक्विड को हीट करना पड़ेगा. ओके, नाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट दिस रिएक्शन? व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन? इज इट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? Is this reaction spontaneous? No, First ma'am. one. क्यों? अगर मैं आइस को रूम में रख रही हूँ, क्या होगा कुछ दिन बाद? ये वाला देखो, वाटर सॉलिड इनटू वाटर लिक्विड. Ma'am, If first वाला है, second वाला नहीं है. मैम जो लिक्विड, स्पॉन्टेनियस होगा. हम लिक्विड टू गैस. हम लिक्विड टू गैस तो एंडो होगा ना. चलो इसको देखते हैं. पहले मैं ऊपर वाले में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा. ओके, यस मैम. ये भी आपका क्या है? एंडो. ओके, पहले मैं फर्स्ट रिएक्शन को स्टडी कर रही हूँ. वाटर सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर लिक्विड. वी नो दैट दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट? बताओ. स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस. कब स्पॉन्टेनियस होगा? एट रूम टेम्परेचर. टेम्परेचर. Yes, it depends upon the temperature. This reaction will be spontaneous at room temperature. All of us know. But if this reaction becomes non-spontaneous at temperature below 0 degrees Celsius, yes or no? अगर मैं एंटार्क्टिका में जाऊंगी तो वहां पर सॉलिड विल नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो इट मींस वहां पर ये वाला रिएक्शन होगा, ये नहीं होगा. So it means water liquid can also convert into water solid can also convert into water liquid, but both the reactions are possible and they can be spontaneous depending upon the temperature. So this reaction is spontaneous
at low temperature below 0 degree, but this reaction is non-spontaneous below 0 degree Celsius. उसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है? Okay, now water liquid into water gas. Water को मैं heat करूँगी, only then it convert into water vapors. Now this reaction is endothermic. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Less energy. Liquids की gases की more energy होती है. Okay, but is this reaction spontaneous at room temperature? No, ma'am. नहीं होता, क्यों? अगर मेरा यहाँ पे पानी गिर गया रूम में, क्या होगा थोड़ी देर बाद? इवेपोरेट नहीं होगा? होता है नहीं होता? होता है मैम. होता है ना? So this reaction is spontaneous at room temperature. Water liquid converts into water gas. अगर आप टेबल पे 2-3 ड्रॉप्स पानी के गिर जाएंगे, they evaporate. क्लोथ्स भी तो इसीलिए ड्राई होते हैं, ठीक है? So it means ये रिएक्शन भी अब आपका कंडीशंस के ऊपर है. So this reaction is spontaneous at room temperature. Room temperature means मैम अगर temperature. हम सी के पास जाए तो वहाँ पे तो कोई रूम टेम्परेचर ऐसा केस होगा ही नहीं, वहाँ पे तो इवेपोरेशन तो होगी ना. वहां पर भी होगी, वहां पर टेम्परेचर तो अबाउट 273 है ना? Yes, ma'am. Okay, but if I am taking the reverse reaction, ये भी होते हैं spontaneous. वाटर वेपर्स, वाटर साइकिल का रीजन ही क्या? व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर साइकिल? जब 6-7 से पढ़ते वाटर साइकिल में क्या, वाटर फ्रॉम द ओशन इज एक्स्ट्रा इवेपोरेट, देन दे फॉर्म क्लाउड्स, एंड व्हेन क्लाउड्स बर्स्ट इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. मैम It बट will वो move. कंडेंस होता है ना. हाँ, तो ये कंडेंस ही हो गया ना? व्हाट इज दिस? मैम अगर मैम उसको वहां से हटा देंगे मैम तब तो नहीं होगा. अच्छा, ये रिएक्शन बताओ, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स टू फॉर्म वाटर लिक्विड, इज इट स्पॉन्टेनियस और नॉट? Ma'am, it Ma'am, is non-spontaneous. Or is it spontaneous at certain temperatures? सर्टेन टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है. It is spontaneous at certain temperature, not all the temperature. मैम क्योंकि हमारे अराउंड भी होते हैं गैसेस आइटम्स, तो वो तो नहीं होती लिक्विड में चेंज. हाँ, सारे नहीं होता, but it depends upon the temperature. यस. ठीक है? तो what does it mean कि अगर मैं, सारी बस कहानी इतनी निकली है कि I cannot try to explain the spontaneity of a reaction on the basis of energy only. Most of the exothermic reactions are spontaneous, true, but all the exothermic are not spontaneous. Certain endothermic reactions are also spontaneous. Third point, there are certain reactions which become spontaneous or non-spontaneous depending upon temperature. ठीक है? तो यानी हमारा जो spontaneous reaction है उसमें डेल्टा H का भी रोल है, टेम्परेचर का भी रोल है. कहीं ना कहीं ये फैक्टर काउंट होते हैं, बट नॉट ऑलवेज. यस और नो? यस. Yes, ma'am. इतना ही हमने किया है कि हम ऐसे बता ही नहीं सकते केवल कि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. नो, हम नहीं बोल सकते ऐसा. नाउ देयर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर आल्सो. ठीक है? तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वाज ट्राइड ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा H एंड देन T. ओके, नाउ सी दिस रिएक्शन. अच्छा, अगर कोई भी, मैं सपोज मैंने परफ्यूम लिया, मैंने उसको एयर में स्प्रे कर दिया, देन व्हाट हैपेंस? मैंने एक परफ्यूम की बॉटल ले ली, Ma'am, it will spread. एक्सप्लोजन हो जाती है. व्हाई इट स्प्रेड्स? Because it's a gas. गैस. ओके, तो अंदर साइंटिस्ट, प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो एकदम से सब हम डिफ्यूजन कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं. then we can say okay, now suppose अगर मैंने 2 कंटेनर ले लिए, एक में मैंने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया ऑक्सीजन, विल दे मिक्स? विल दे मूव? ओपन है? मैम ये तो मैम जरूरी है नहीं मैम. मिक्स मैम नहीं प्लीज होंगे. रिपीट द क्वेश्चन. आई एम टेकिंग 2 ओपन कंटेनर्स, 2 कंटेनर्स हैं, इनको आपस में ओपन है यहाँ से, तो विल द गैसेस मिक्स? मैम मिक्स तो होंगे बट बहुत स्लो रेट पे होंगी. बट मिक्स होंगे.
ओके, आई एम टेकिंग ओपन कंटेनर, इसके अंदर मैंने एक सपोज कोई गैस ले ली जिसकी स्मेल होती है, अमोनिया गैस ले ली, ठीक है, ओपन कंटेनर है, आई एम टेकिंग अमोनिया गैस, आपस में एयर है, so why we are able, will the ammonia evaporate into the air, will the ammonia mix with air, air is also a mixture of gases, Yes, ma'am. हमें स्मेल कैसे मैम आती है, तो होगा मैम, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा मैम, मिक्स तो होगा। मिक्स होगा ना, हमें कुछ करना पड़े या अपने आप मिक्स होगा, अपने आप हो जाएगा मैम, मैम लेकिन अपने आप ही होगा। टाइम टेकिंग होगा। अपने आप हो जाती है, ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन, अगर कभी फूड जल गया तो वी गेट अ बर्निंग स्मेल, होता है ना ऐसे, Yes, हमें ma'am. बर्निंग स्मेल बहुत जल्दी आती है, या कहीं कुछ फ्यूल जल रहा है तो वी गेट अ बर्निंग स्मेल, व्हाई, बिकॉज Yes, ma'am. gases जनरली मिक्सेस, so it means that mixing of two gases is spontaneous, yes or no, Yes, ma'am. mixing of gases, बस ये पॉइंट ना बेटा तो समझने वाला और कुछ भी नहीं है इसमें, कहानी है ये सारी, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस इज स्पॉन्टेनियस। अच्छा, जब हमारी गैस मिक्स होती है तो हम क्यों बोलते हैं कि डिसऑर्डर इंक्रीजेस, होगा या नहीं होगा, डिसऑर्डर इंक्रीज होगा नहीं होगा, अगर मेरा ये Yes, ma'am. अमोनिया है, ठीक है, ये इस कंटेनर में है, बंद है कंटेनर, तो केवल अमोनिया यहाँ मूव कर रही है, बट इफ आई एम ओपनिंग द कंटेनर तो एयर कहाँ, अमोनिया इस कंटेनर से बाहर भी जा रही है ना, तो इट मींस अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर ज्यादा हो गया, एक कंटेनर में पहले इनक्लोज थे, तो जैसे एक स्टूडेंट्स है, व्हाट हैपेंस, जब पीरियड चल रहा हो तो दे आर इन द क्लासेस ओनली, तो डिसऑर्डर कम है या ज्यादा, कम है, क्लास के अंदर ठीक है भाग भी रहे, इट्स ओके, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द रिसीज इज देयर, व्हाट अबाउट द, मैम सही मैम ब्रेक होता है मैम, वो लोग मैम, बच्चे लोग मैम इधर इधर से उधर भागने लग जाते हैं। तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया, यस मैम। और एक नेचुरल टेंडेंसी है ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर रिसीज होगी तुम अंदर ही बैठे रहोगे, उल्टा अगर बात भी करो तो चुप होके बैठ जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना, उल्टा ही होगा ना, यस और नो, तुम एक रूम के अंदर इनक्लोज हो, जैसे ही रिसीज होगी, ऑब्वियसली अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, अगर प्रिंसिपल मैम नहीं खड़ी है रूम के बाहर, तो तुम ऑब्वियसली बाहर भागोगे, यस मैम। ठीक है ना, वेरी ट्रू, ओके, so it means that it is a natural tendency for any object to become disordered, so it has been found that most of the reactions Excuse me, ma'am. yes, मैम एक डाउट तक मैम, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमेशा एंडोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि इसमें डेल्टा एच 0, हाँ हो सकता है, that can also be there, अभी हम कर रहे हैं, एक एक करके बिल्ड कर रहे हैं, मैंने कहा ये सारी हमारी कहानी है एक्चुअली में, टू कम टू द टॉपिक, दैट्स ऑल, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच डिसऑर्डर इंक्रीजेस आर स्पॉन्टेनियस, मोस्ट बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, अब यही एग्जांपल लेते हैं दोबारा से, वाटर गैस इनटू वाटर लिक्विड, ठीक है, अच्छा इस केस में, अच्छा डिसऑर्डर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एंट्रोपी, अरे ये भी साथ साथ करा देती हूँ, देन आई विल बी टेकिंग अगेन, उसके बाद अब हम बस पूरा समराइज करेंगे, ठीक है, तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बट दिस वाज नॉट सक्सेसफुल, exceptions, number of exceptions were there. Now I am trying to explain on the basis of second factor, that is entropy. Entropy is a measure of disorder of a reaction. Entropy is a measure of disorder of a reaction. If the change in disorder, if delta S means change in entropy is positive, it means disorder increases. If delta S is equal to negative, then this order decreases. Okay, delta S is positive means it is going to the higher side, so disorder is increasing. If delta S is negative means disorder is decreasing. Okay, now let's see this reaction. Ma'am, the left side of the board is not visible.
Okay. Yes, ma'am. ठीक है. If I am taking is this rate. अच्छा, disorder सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? Solid में, liquid में, gas में? गैस में. मैम गैस. Gas के अंदर. मैम गैस. हम डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? मतलब मूवमेंट. डिसऑर्डर मींस Okay. मूवमेंट. सॉलिड के अंदर डिसऑर्डर सबसे कम होता है. सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है. लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स आर एबल टू मूव. गैसेस में दे कैन मूव इवन मोर फ्रीली. ऑल ऑफ यू नो सॉलिड लिक्विड गैसेस के अंदर हम यही पढ़ते थे ना. गैसेस में पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. इट मींस दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग. देयर इज नो ऑर्डर अमंग द गैस पार्टिकल्स. Okay, now I am trying. Delta S means change in entropy. Delta S means change in entropy. कि disorder increase हुआ है, decrease हुआ है. ठीक है. अगर change in entropy positive है तो it means disorder increase हो गया, कम से ज्यादा हो गया, and negative means disorder decreases. Okay. Now I am coming to a very general question and try to now correlate all the factors. Carbon plus oxygen gives carbon monoxide. Is it okay? It is an example of incomplete combustion. Now, can you tell me what about the sign of delta H here? Whether this reaction is endothermic or exothermic? कोई भी चीज बर्न हुई है. हीट रिलीज होती है मैम इसमें. हम एंडोथर्मिक का. Will be exothermic. होगा exothermic नहीं होगा? Yes. ठीक है. Okay, so this reaction is exothermic because चाहे combustion है, complete हो या incomplete हो, अंगीठी अगर जलती है, हम कहते हैं ना during in winters if you keep अंगीठी burning then carbon monoxide is produced in a closed room. But if anything is burning, obviously the energy will be produced. So delta H is negative. Okay. Now can you tell me about the disorder? यहाँ पर कार्बन सॉलिड है. सॉलिड्स का तो डिसऑर्डर होता ही नहीं. पॉजिटिव होगा. डिसऑर्डर विल इंक्रीज मैम, क्योंकि मैम गैस का डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है. यहाँ पर भी सॉलिड से गैस में जाता. यहाँ पर भी नहीं, ये भी तो गैस है, ऑक्सीजन भी तो गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है. इसको तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल ज्यादा हैं. मैम सॉलिड भी, मैम कार्बन सॉलिड भी तो है मैम. डिसऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएगा ना. मैम आपका स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है. अब हो गया, दिख गया? यस मैम. यस मैम. नो मैम. और लाइट तक दिया कर दो सोसाइटी के लिए. क्या भी नहीं दिख रहा? मैम दिख गया. मैम दिख रहा है. दिख गया ना? चलो ठीक है. Okay, if I am taking is 1 mole of oxygen, then 2 moles of gases are produced. So more amount of gases are produced. So entropy भी क्या होगी? Increase. Yes or no? So it means that for any reaction, if the reaction is exothermic and delta S is positive, so these type of reactions are always spontaneous. The first category of reactions are those in which the reaction is exothermic, because scientists find out that most of the spontaneous reactions are exothermic. The disorder be increase हो रहा है. So if both the conditions are in favor, then the reaction is always spontaneous. Okay. Now, second type of condition, let's see. If I am taking is water liquid converts into water gas. Now, what is the sign of delta H here? And what is the sign of delta S? Is this reaction exothermic or endothermic? Endo. This is positive. We have to give it heat. Water liquid को मैं heat करूँगी. I am supplying the heat. Then it convert into water vapors. And what about the delta S here? This one. Positive. Ma'am, positive. Ma'am, delta S will be positive.
Okay. So it means that in this reaction, first एक कर रहा है endothermic है, but it is disorder increase हो रहा है, एक factor favor कर रहा है और एक नहीं कर रहा. Yes or no? One of the factor is favoring because disorder is increasing, but the delta H is positive. So these type of reactions in which only one factor favor. अगर दोनों favor कर रहे हैं, always spontaneous if both delta H is and delta S are favoring. अगर दोनों ही favor, if a reaction in which both are मैम बीच बीच में रुक रहे हो मैम. क्या करूं? मैं वही बता रही थी कि कल सोसाइटी में जो मीटर में आग लग गई थी नीचे, तभी मेरे को लगा था कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार आ रही थी जब मैंने डिसकंटिन्यू करा दिया था. अब फिर वही हो रहा है. मैं अपना एक में फोन कब पे चला लेती हूँ, वाईफाई बंद ही कर देती हूँ. मैंने अपना फोन का नेटवर्क ऑन किया ना. आई डोंट थिंक देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. ओके, नाउ दोज रिएक्शंस इन व्हिच वन फैक्टर इज फेवरेबल and other is not. ठीक है, एक फैक्टर फेवरेबल है डेल्टा एस, एक फैक्टर फेवरेबल नहीं है. आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. कुछ रिएक्शन जो होते हैं दे डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. अगर एक फैक्टर फेवर कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. वी नो दैट दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर. At high temperature, water liquid will always convert into gas. Yes or no? If I am taking the temperature as 105 degrees Celsius, this reaction will be spontaneous. जो भी liquid होगा वो gas में convert हो जाएगा. Water will evaporate completely. So it means if one factor is favorable and other is not, they are temperature dependent. Okay. Now, if I am taking it this one, can we combine hydrogen and oxygen to form water? अच्छा, पहले तो इसका डेल्टा एस बता दो. What about delta S? Disorder. Increase हो रहा है, decrease हो रहा है? नेगेटिव आएगा. Negative. डिक्रीज. यस हम नेगेटिव आएगा. Disorder है और यहाँ पर लेस डिसऑर्डर है. लिक्विड्स के अंदर डिसऑर्डर कम होते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा एच तो नेगेटिव है. व्हाट अबाउट डेल्टा एच? Do you know by a method by which hydrogen and oxygen can be combined to form water liquid? By passing electricity. This reaction can take place if we are electricity. What about delta H? Is it negative or positive? We are supplying energy by passing electricity. Positive. मैम पॉजिटिव. मैम एंडोथर्मिक का. Okay. So it means only so that is not. अगर दोनों factors favor कर रहे हैं, first case देखो, if the both the factors are favorable, then the reaction is always spontaneous. If one factor is favorable, other is not, then it may be spontaneous, may not be. They depend upon temperature. But if both the factors are not favorable, it means entropy will decrease हो रही है और reaction endothermic भी. This reaction is non-spontaneous. As long as we are passing electricity. दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं. Let's wait. Okay, is the board clear now?
Yes, this portion of the board. The board is not visible. नीचे वाला भी visible Ma'am, the book is visible. मैम बुक इज मैम आपकी वॉइस है बेटा. ब्रेक हो रही है. अब देखो ठीक है. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. So what I was trying to tell you, कि if both are favorable, then the reaction is always spontaneous. One of them is favorable, other is not. Then the reaction may or may not be spontaneous. But if both are non-favorable, then the reaction is always non-spontaneous. यानी अगर आपका disorder भी कम हो रहा है और endothermic भी है. As long as you are passing electricity, hydrogen and oxygen will form water. But when you stop passing electricity, the reaction will not happen. Okay, so this is an example of non-spontaneous reaction. Okay, see about this reaction. आप नहीं कर पाओगे. Let me take a easier reaction. Just wait. Decomposition of ozone to form oxygen. Now, what do you think about this reaction? What about delta S? Is it positive or negative? नेगेटिव होगा मैम. Negative होगा. मैम एक सेकंड. यहाँ पर two ओजोन moles हैं ozone के. ऑक्सीजन बना रहे हैं हम. Ozone is converting into oxygen. Ma'am, your video is not clear. बेटा एक बार आप अपना कनेक्शन दोबारा देखो करके ट्राई. बाकियों को दिख नो रहा है मैम ये वीडियो? बहुत नो मैम ब्लर है. नो Blur है, मैम ब्लर blur. है. तो टाइम भी पीरियड में रुक जाओ. दोबारा अपना नेटवर्क ऑन करके देख लो. Is it better now? नो मैम. अब देखो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम बोर्ड तो विजिबल है बट ब्लर है थोड़ा थोड़ा. यस मैम आप क्लियर. नहीं. Ma'am, clear है ठीक है. ma'am. Ma'am, clear दिख रहा है. मैम, दो Clear तो दिख example- रहा है ma'am. तो एग्जाम्पल सब खत्म करो. ठीक है, दिख रहा है ना? जिस पोर्शन में Yes. दिख रहा है मैं वही करा. Yes, ma'am. ठीक है. Okay. 2 moles of O3 are converting into 3 moles of oxygen. So will the disorder be किसमें ज्यादा होगा? जहाँ पे gases मोल ज्यादा होंगे. यहाँ पर मोल disorder है. So what Yes, about ma'am. delta? ठीक है ना? Ma'am, delta Yes, H ma'am. positive होगा. And what about delta H? Now suppose it is negative. आपको given है कि delta H is negative. This reaction is an exothermic reaction. Suppose this is given to you. So will the reaction be always spontaneous? Will this reaction be spontaneous? यस मैम. Yes. यस मैम ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. Yes, ma'am. Spontaneous. So it means that now the scientists, they tried to explain spontaneity of the reaction on a basis of combination of 2 factors. First, they try energy only. It was not successful. Second, they try on the basis of disorder. It was not 100% successful. So they combine the 2 factors and find out the spontaneity of a reaction. Okay. So now I am just concluding it. So what is first thing is that, and this factor is given as delta G. Delta G is called as Gibbs free energy. Is a measure of useful work. कल थोड़ा सा और आगे, बस कल खत्म हो जाएगा. कल नहीं मंडे को. Done by the system. Delta G is a measure of useful work done by the system. And this is a factor which takes into account both delta H and delta. इसकी derivation मेरा कल कराऊंगी.
delta G is given by the formula delta H minus T delta S. If delta G is negative, reaction is always spontaneous, always. So इन दोनों factors को combine करके they took into account another factor which is called as Gibbs free energy. This is the definition. Delta G is called as Gibbs free energy. Definition is it is a measure of the useful work done by the system. And if change in Gibbs energy is negative, then the reaction is always spontaneous. If delta G is equal to positive, so always non-spontaneous. Okay? So this is the summary. Now the scientists derived a new factor which they called as Gibbs free energy, and they find out on the basis of sign of the delta G that if delta G is negative, reaction is always spontaneous. If it is positive, then the reaction is always non-spontaneous. Is it okay? Derivation कल कराओगी? हाँ बोलो. Yes, any doubt? मैम T constant है यहाँ पे कोई? T is the temperature. Whatever is the temperature given. Okay मैम. Whatever is the temperature given. Okay. Now let's try to correlate it on the basis of sign of this. I have told you if delta H is negative and delta S is positive, then the reaction is always spontaneous. This I have told you. If the reaction is exothermic as well as the disorder is increasing, it is always spontaneous. Okay, now let's try to see, this is the last topic of today. If we try to do delta G, the sign, let's calculate the sign of delta G on the basis of sign of delta H, delta S and temperature. The relation we know is that delta G is equal to, derivation कल कर लेंगे, आज this concept is delta H minus T delta S. Now if delta H is negative and delta S is positive, what do you think? ये term आपकी negative है. अच्छा अगर delta S positive हो गया तो what is minus T delta S? Negative हो गया? Yes या no? Yes ma'am. No. Yes. अगर S positive है तो T delta S क्या हो गया? Positive हो गया. तो ये भी टर्म ये नेगेटिव है, ये माइनस साइन के साथ पॉजिटिव है, तो क्या होगा बोलो? ये नेगेटिव होगा. माइनस टी डेल्टा एस क्या बन गई? नेगेटिव बन गई ना. तो ये टर्म भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, टी की कुछ भी वैल्यू. तो अगर ये टर्म भी पूरी नेगेटिव है और माइनस टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा ना. यस और नो? So it is not dependent on temperature and it is always spontaneous. So in this particular case, it is always spontaneous. So this we can easily calculate from the formula. Okay, if delta H is positive and delta S is negative, अगर delta S negative है तो what is minus T delta S? Positive हो गया. कि ये वाली टर्म भी अगर मेरे पॉजिटिव है और ये भी अगर मेरे पॉजिटिव है और माइनस T delta S भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? What will be the sign of delta G? दोनों ऐड हो गई ना. अगर ये टर्म है सपोज 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस टेम्परेचर जो भी है, और ये टर्म मेरी नेगेटिव है -1, तो ये क्या हो गया? 2 प्लस टेम्परेचर. टेम्परेचर तो हमेशा 0 केल्विन से ऊपर ही होता है. टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन. मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन. तो ये टर्म हमेशा क्या हो गई? पॉजिटिव आ गई. So it is always non-spontaneous. Yes or no? Yes ma'am. Okay. अब हम सेकंड थर्ड केस पर आ रहे हैं कि एक टर्म फेवर कर रही है और एक टर्म फेवर नहीं कर रही. Now suppose this is negative and this is also negative. एक ये भी नेगेटिव है, डेल्टा H, और डेल्टा S भी नेगेटिव है. What does it mean? Ma'am, either positive or negative. Yes. ये डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये मैंने कहा नेगेटिव है और ये भी टर्म आपकी नेगेटिव है, तो यानी माइनस T डेल्टा S क्या हो गया? पॉजिटिव.
तो अब जो सी वैल्यू बड़ी है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, यस और नो। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर टी डेल्टा एस बड़ा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैंने किसी तरह से टेम्परेचर को लो कर दिया, अगर मैंने कहा कि एट लो टेम्परेचर, देन व्हाट हैपेंस? अगर टेम्परेचर कम है, नेगेटिव। अगर मैंने टेम्परेचर लो ले लिया, अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम है तो ये वाली चीज छोटी हो गई, तो इट विल बी नेगेटिव। तो एट लो टेम्परेचर delta G will be spontaneous, will be negative. So now in this particular case, it is depending upon the temperature. So if the temperature is low, so overall delta G क्या होगा, negative. But if I am taking it, proper table में ही कर दीजिए, एक हो गया delta G का साइन. Now this is the temperature. Okay. तो एट लो टेम्परेचर तो डेल्टा जी क्या हो गया मेरा, नेगेटिव, यानी स्पॉन्टेनियस. बट व्हाट हैपेंस एट हाई टेम्परेचर? अगर टेम्परेचर हाई होगा तो देन व्हाट हैपेंस? अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ओवरऑल कौन सी टर्म बड़ी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई, माइनस डेल्टा एस बड़ी हो गई। तो यानी डेल्टा एस क्या था, नेगेटिव था, तो ये तो पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी हो गई, डेल्टा एच था नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव था यानी माइनस टी डेल्टा एस हो गया पॉजिटिव। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो ये टर्म बड़ी हो गई, तो इट मींस एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस. So those reactions in which one factor is favorable and other is not, so they are temperature dependent. Can you give me an example for this conversion with water के हिसाब से? If I am taking water liquid into water solid, what about disorder? कम हो रहा है, बट लिक्विड्स की एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है, और सॉलिड्स की एनर्जी कम होती है. So it means in this case overall energy will be released. So this is a type of this case, conversion of water liquid into water solid. Now this reaction is spontaneous at low temperature. We all know. यहाँ पर डिसऑर्डर कम हुआ है ना, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर डिसऑर्डर कम होता है, तो डेल्टा एस इज नेगेटिव. वाटर में एनर्जी ज्यादा है, आइस की एनर्जी कम है, तो इट मींस डेल्टा एच इज नेगेटिव, ओवरऑल एनर्जी इज रिलीज्ड. More energy to less energy means energy is released. So if one factor is favoring and other is not, then it is temperature dependent, and at low temperature this reaction may be spontaneous. Yeah. Last point, if it is positive and this is also positive, if both the factors are positive, if both the factors are positive, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये ओवरऑल टर्म क्या हो गई, नेगेटिव. ठीक है, तो क्या चीज बड़ी होनी चाहिए, तब होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. अच्छा, लो टेम्परेचर पे बताओ, इफ द टेम्परेचर इज लो, एक टर्म पॉजिटिव है, ये भी टर्म पॉजिटिव है, तो माइनस टी डेल्टा एस ओवरऑल हो गया नेगेटिव. ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस ओवरऑल हो गया नेगेटिव. तो अगर टेम्परेचर कम है तो स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं होगा? अगर ये चीज कम है, टेम्परेचर कम है, तो यानी नेगेटिव वाली चीज कम हो गई ना, पॉजिटिव वाला ज्यादा हो गया, तो डेल्टा जी इज पॉजिटिव. दोबारा से कर लेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेना इसको, डेट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. बट if at high temperature, if I am taking the temperature as high temperature means negative वाली साइन बड़ा हो गया, तो डेल्टा जी will be negative. So these type of reactions in which one term is favoring and other is not, they are temperature dependent. From this, numericals can come from this formula as well as one marker questions can come. If you want, I will again revise the topic tomorrow. पूरा वो बाकी सारी कहानियां नहीं बताओगी, so I will revise the topic tomorrow from this table only. Okay, I am taking the screenshot of the attendance, or just tell me your attendance once. Let me check. Yes, आरव ग्रेवाल. Board for a second. दिख रहा है बोर्ड? Yes, ma'am. आरव ग्रेवाल,
अभी लीव मत करना, मैं एब्सेंटीज का स्क्रीनशॉट भी लूंगी। आरव ग्रेवाल, आरव शर्मा, अग्नीश, ऐश्वर्या, अक्षिता, अमन, प्रेजेंट मैम। अमन, अरुमिता, आर्यन सिन्हा तो Present, ma'am. प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। अमन, अमन की वॉइस नहीं आ रही। ओके, आयुष शर्मा, भव्या, प्रेजेंट मैम। भव्य भारद्वाज। भव्या मिश्रा, दमन, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। गौतम कक्कड़, गौतम कुमार, हिमांशु, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। हिमांशु प्रेजेंट। ओके, जयंत, कनक, लक्ष्य, प्रेजेंट मैम। ओके, लिनोय, मानव, ऋषभ, कनक, कनक का रिस्पॉन्स Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। Amisha present. Ma'am, present. रोहन, साहिल बिष्ट, साहिल शर्मा, Present, ma'am. ओके, संयम, शाश्वत, शिवांश, प्रेजेंट मैम। संयम, संयम का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। श्रिया, सिद्धांत शर्मा, सिद्धार्थ जैन, प्रेजेंट मैम। ओके, सिद्धार्थ सेमवाल, वानी, Present, ma'am. वंशिका। Present मैम। Okay, you can leave now, all of you. थैंक यू मैम।